बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Dear students, subscribe my YouTube channel for getting the test video of physics class. Now, dear students, we come to our today lesson. Today lesson is chapter 1, exercise problem, part 2. In previous lesson, we did half of the numerical, and now we will discuss our remaining numerical in this lesson. And question number 6, what are the dimensions and unit of gravitational constant G in the formula F is equal to G m1 m2 over r square? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास ये फार्मूला है फॉर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसका फार्मूला F इज इक्वल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। G इसमें क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m आपके पास क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 is the mass of second object, and r is the distance between them. And question is that we have to calculate out the dimension of gravitational constant G. So this is our target, that we have to find dimension of G. This is our dimension of G we have to find out, and second we have to find out the unit of the G. So as according to rule, we write the formula. So we write a formula F is equal to G m1 m2 over r square, and after then we will rearrange this formula. Why we will rearrange this formula? Because we want the value of G. We want to find out the value of G, and it's also dimension of G. So G is equal to, इसमें देखिए r स्क्वायर क्या है डिनोमिनेटर में, तो इधर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, f r स्क्वायर बन जाएगा, and m1 and m2 both are masses, they are above the numerator, they go other side and they will divide it. तो सो आपके पास जो फार्मूला बन रहा है फॉर G के लिए, G is equal to f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. तो सो अब हम क्या कर दिए, इसमें डायमेंशन जो है वो अप्लाई कर दिए जी। तो डायमेंशन अप्लाई किए, ये आपके पास G dimension is equal to f r square divided by m1 m2 within the square brackets, mean that is the dimension. अब हमने क्या करने हैं, इनको अलग-अलग कर लिया है, f का डायमेंशन सेपरेट कर लिया, r का डायमेंशन विद पावर अलग कर लिया है, एंड देन m1 m2 ने। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। इसमें देखें तो हमने फोर्स का डायमेंशन दैट इज ml t इनवर्स 2, ये हमने इंसर्ट कर दिया, एंड देन रेडियस लेंथ में कंसीडर होता है, सो हमने इसका डायमेंशन क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिए है, एंड देन डिवाइडेड बाय m1 m2, 2 टाइम मास है, तो m1 हो या m2 हो, तो ये मास है और इसका डायमेंशन सेम ही कंसीडर हो गया m into m। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसमें देखें तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन जो है, इसका डायमेंशन m इनवर्स 1 l पावर 3 t इनवर्स 2। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू ऑफ G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसमें देखें तो एक m और ये एक m जो है यहाँ से कैंसिल हो गया डायमेंशन के साथ, तो m जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर इनवर्स हो जाएगी डिनोमिनेटर से, तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर से पावर +1 थी, ऊपर आके -1 होगी, एंड l पास क्या है, एक l यहाँ इधर पहले में मौजूद है और एक l स्क्वायर इधर है जी, ये मल्टीप्लाई हो गया, l क्यूब बन गया t इनवर्स 2। इस तरीके से हमने इसका ये डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चाहते हैं इसकी यूनिट फाइंड आउट करें, तो सिंपल फार्मूले में जो वैल्यूज इंसर्ट हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी इसमें यूज हो रही है, हम क्या करें उसकी यूनिट इंसर्ट कर देंगे। ये देखें फोर्स की यूनिट आपके पास क्या है, न्यूटन होती है, हम न्यूटन अप्लाई कर दिया। आर आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, एंड देन मास आपकी यूनिट आपके पास इसकी किलोग्राम होती है, दो मास मल्टीप्लाई हो रही है तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया। सो बाय दिस वे वी फाइंड आउट द यूनिट ऑफ G, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। So this is our question and its explanation. If you have any question, then you can ask questions. Come to our question 7. Show that the expression Vf is equal to Vi plus At is dimensionally correct, where Vi is the velocity at t is equal to 0, as A is the acceleration and Vf is the velocity at time t. तो डी स्टूडेंट यहाँ आपके पास क्या है, क्वेश्चन 7 में ये बताया गया है कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये एक्सप्रेशन है, दैट इज Vf is equal to Vi plus At. Vf से मुराद क्या है, फाइनल वेलोसिटी है after some time t. Vi is the initial velocity, this is the Vf, that is the final velocity after some time t,
and Vi is the initial velocity at the start of the your motion. A is the acceleration of the body, and T is the time after some time your car or object which is moving. And we have to find out that is dimensionally correct or not. And I already told you, Vi is the initial velocity, T is the time, A is the acceleration, and Vf is the final velocity. Now, for that purpose, rule was that we will take the equation and take the dimension on left hand side before, and then after that we take the dimension of equation on right hand side. We'll compare the both sides of dimension. If they are equal to each other, it means that this equation is dimensionally correct, and principle of homogeneity of physical equation is applicable here. If not, then this equation is not dimensionally correct. So this principle of homogeneity of physical equation it is not applicable. So according to procedure, so this is the left hand side of the equation, this is the left hand side of equation, and this is the Vf. So Vf is here final velocity or speed, so Lt inverse 1. So this is the dimension of speed or velocity, because speed and velocity they both have a same dimension. After that, now we come to our right hand side of equation, that is right hand side of equation. This is the right hand side of equation, that is Vi plus At. Vi is the initial velocity, give the dimension, plus A is also a quantity, physical quantity. We give dimension separately, multiply T and time. So here velocity dimension of speed, that is Lt inverse 1, plus acceleration dimension, that is Lt inverse 2. We insert the values, and time T dimension. So after calculation, we have to check it out, that is Lt inverse plus Lt inverse. So we add them. After adding, it will be Lt inverse 2, and after adding, it will be 2 L inverse T. Here 2 will be there, but you know that there is a no dimension for numerical value. There is 2 times Lt inverse 1 plus Lt inverse 1. After calculation, it will be equal to 2 Lt inverse 1. So as you know that dimension has a no information about numerical value, so we will reject this 2. It means it has no, 2 is the number, it is useless, it has a no dimension. So it means that dimension on right hand side of equation and equal to dimension on left hand side of equation. ये देखें, तो हमने इसको dimensionally check करना है जी. हमें जो question दिया गया, we have to check it dimensionally. So dimension on left hand side of equation, that is Lt inverse 1, and dimension on right hand side of equation, that is Lt inverse 1. So dimension on both sides of equation which are equal to each other, it means that our equation, that is Vf is equal to Vi plus 8 is dimensionally correct. इसमें हमने ये नहीं देखना कि आया ये साथ 2 हो रहा है जी, जैसे हम x plus x करते हैं ऐड तो 2x बन जाता है, उसमें तो ऐड होते हैं क्योंकि उसमें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. यहाँ हमने क्या करना है, डायमेंशनली करना है. तो डायमेंशन में जो है ऐड यानी या सब्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें आपके पास क्या नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हो तो आपको पता है कि डायमेंशन जो है वो इंफॉर्मेशन नंबर्स के वाले से नहीं देता है, लिहाजा या आप नंबर्स के वाले से बात नहीं करेंगे. तो सिंपल आप देखेंगे that is right hand side is equal to Lt inverse, that's a dimension. So we will compare both sides, that is the left hand side dimension, that is Lt inverse, and right hand side dimension, that is Lt inverse. Both sides are equal to each other. So our conclusion is that dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. So this equation, that is Vf is equal to Vi plus 80, it is a dimensionally correct. So this is our question and its explanation. Our next question is question number 8. The speed v of the sound waves through a medium may be assumed to depend upon density rho of the medium and its v, that is its modulus of elasticity, which is the ratio of stress to the strain. Deduce the method of dimensions and the formula for speed of sound. तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम. दिस इज द ही इज टेलिंग दैट दीस टू पॉइंट्स आर गिवन, दैट इज वी द स्पीड ऑफ साउंड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड speed of sound which is also directly proportional to elasticity E of the medium, modulus of elasticity. And it is a modulus of elasticity. What is this? It is a ratio of stress to the strain. We have to find out the formula for speed of sound by using dimension method.
formula for speed of sound. We have to find formula for speed of sound by use of dimension analysis or dimension method. So this is our question. So these students come to our solution, that is a E is here as it is described in the question statement. E is the ratio between stress over strain. So stress is a force per unit area and divided by strain. It is a numerical value. Strain is a ratio between the same units. So it is a number. And then it has a no dimension. So our dimension of modulus elasticity is only stress, that is a force per unit area. And here we insert the dimension of force. This is the dimension of force, and then area dimension is L square, length square. And after calculation, our dimension of modulus of elasticity is ml inverse T inverse 2. So this is our dimension. Your question is that where is the dimension of strain? I told you before that strain is the ratio between two same quantities. So there is no dimension of the strain, only there is a dimension of stress is there. And so here stress is force per unit area. We insert the dimension of force and area, and after calculation this is the final dimension of modulus of elasticity. And now density, we already this point was given that speed of sound is also directly proportional to density of the medium. So density is equal to mass per unit volume. This is its formula. So we inserted the dimension of mass and volume, that is m, and volume dimension is L cube, and after calculation it will become as a ml inverse 3. So this is the dimension of density. So as according to our given statement, that is a speed of sound which is directly proportional to density into elasticity, and we have to assume here that the density power is A and elasticity power is B. Whereas in question statement it is given that speed of sound is directly proportional to density and elasticity. So we suppose here A is the value of the power of density and B is the value of the power of elasticity, and we have to equate it, that is the V is equal to constant into density power A and elasticity power B. तो ये आपके पास है डी स्टूडेंट, जब भी आपका प्रोपोर्शनल का साइन होता है, जब इसे हम एंड करते हैं तो इक्वल होता है, साथ कांस्टेंट मस्ट आता है. तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 है, दैट इज आवर मेजर इक्वेशन. सो आफ्टर देन we will take the dimension on both sides of equation, because we want to find out the value of A and B. So we will take the dimension on both sides of first equation. So first equation on left hand side, this is the left hand side of equation, this is the speed or velocity. And so हमने इसमें dimension apply कर दिए. V dimension is equal to constant, कोई dimension नहीं होती, ऐसे ही लिखा जाएगा. And then density इसका dimension, and then elasticity इसके dimension, and same power will be there, A and B as we suppose this power. And here in this at that place we insert the dimension of velocity or speed, that is LT inverse 1 is equal to constant, same like that. And then density formula is dimension as we calculated above. So we put the dimension, start the dimension at that place. So ml inverse 3, and then dimension of elasticity. So we insert the dimension of air. After then, now we will compare both sides of the dimension of both sides of this equation. So इसमें आप देखें हमने इसे सॉल्व किया है पहले, तो LT inverse 1 and then is equal to constant. इसमें देखें m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, that is the same variable, and when same variable multiply, their exponent will be added to each other. So आपके पास A and B, आपके पास क्या A plus B, ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया. ये पहले में देखें तो m with power A, so A is there, and then in second dimension m with power B, so A plus B. And same like that, L is also multiplied, L power minus 3A in first dimension, and second is here L power minus B. So both are the same variable, so the exponent will be added, that is minus 3A minus B. And same like that, time is there, so time dimension is here 3 power minus 2B. So this is there, we have to solve it. After that we will compare the dimension of length on both sides of equation, and compare dimension of mass and time also one by one. We have to compare a dimension of the T, that is a T dimension on left hand side, that is the
its exponent, that is the t power dimension is -1 on left hand side, and here t dimension on the right hand side, that is the its power is t power -2b. ये आप देखें इसके डायमेंशन है, यहाँ पर इसकी पावर t पावर -2b, और यहाँ आप पास के t की पावर के -1, इसके एक्सपोनेंट को आपस में इक्वेट करते हैं। तो सो जब आप पास बेस से बराबर हों तो उनके एक्सपोनेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने लॉग 10th क्लास में पढ़ा था। तो सो उसी रूल के तहत क्या है, -1 इज इक्वल टू -2b, और यहाँ से हमने क्या किया है, b की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो ये आप पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, अब जाकर डिवाइड हो गया, तो इज इक्वल टू ये b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 आ गया जी। और उसके बाद हमने यहाँ पे मैथ्स के डायमेंशन किए, वेरीफाई किए। इधर आप देखिए मैथ्स के डायमेंशन के जो एक्सपोनेंट है a प्लस बी ए पावर में, एंड देन अदर साइड के यहाँ कुछ भी नहीं है, मैथ्स नहीं लिखा हुआ, तो मीन m पावर 0 इज देयर। एनी नंबर, एनी वेरिएबल इट्स एक्सपोनेंट इज 0, मीन इट विल बी इक्वल टू 1, एज यू स्टडी इन दिस मैथमेटिक्स क्लास 10। सो यहाँ m पावर 0 इज देयर, मीन m का डायमेंशन जो है उसकी पावर क्या 0 है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब आपके पास क्या है, आप a की वैल्यू चाहते हैं तो b दूसरी साइड भी जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और अब आपने b की वैल्यू इंसर्ट कर दी इसमें, b की वैल्यू 1/2 है, तो ये आपके पास a की वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा जी। अब जी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, दैट इज -1/2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है। अब हम इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं जी। ये देखिए आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। v इज इक्वल टू कांस्टेंट p पावर रो पावर a एंड इलास्टिसिटी पावर b। तो इसमें हम देखें वैल्यूज इंसर्ट कर दी, दैट इज a पावर -1/2, रो पावर -1/2 एंड e पावर 1/2 जी। तो -1/2 नीचे आप क्या होगी, है प्लस होगी, और यहाँ हमने तो क्या कर लिए, स्क्वायर रूट कॉमन ले लिए। सो आपके पास क्या फार्मूला क्या आ गया, v इज इक्वल टू कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो एंड स्क्वायर रूट जी। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड हमने डायमेंशन क्या कर लिया, इसे डिराइव कर लिए। Dear students, now to question, or then you can ask question. Next question 9 is there. That is a problem solving number 9. Show that the famous Einstein equation E is equal to mc square is dimensionally consistent or correct. तो हमारे पास dear students question ये है कि famous Einstein equation E is equal to mc square is dimensionally consistent or not, ये correct है या नहीं है, ये हमने check करना है जी। तो same method is that we will take this equation left hand side, and we will insert the dimension on left hand side, and after then we will take the right hand side of equation, we will insert the dimension on right hand side of equation. If dimension on both sides of equation are equal, then it means that this equation is dimensionally consistent. So we take our equation, that is E is equal to mc square. E is the left hand side of equation, so this is the E. We take left hand side of equation, E is equal to energy, and this energy is equivalent to work done. This energy is equivalent to equal to work done, and work done formula is FD. As you study in your class 10, work done is equal to force multiplied displacement. तो ये हमने क्या किया है, इस वर्क के डायमेंशन अप्लाई कर दिए। तो ये F से मुराद का पास फोर्स है और D से मुराद का डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने क्या किया है कि इस फोर्स के डायमेंशन यहाँ इंसर्ट कर दी, दैट इज ml T इनवर्स 2, और साथ ही डायमेंशन के फार्मूला L आपके पास, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया सारा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो डायमेंशन है, दैट इज ml स्क्वायर T इनवर्स 2 जी। तो इसमें आप देखें m आपके पास सिंगल दफा है, वो हमने लिख दिया, l और l मल्टीप्लाई हो क्या बन गया, l स्क्वायर बन गया, एंड t पावर -2। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, यानी कि E एनर्जी के डायमेंशन दैट इज इक्वल टू वर्क, एंड हमने इसका फार्मूला अप्लाई किया वर्क का। उसमें डायमेंशन के जो फिजिकल क्वांटिटीज में यूज हो रही है उनके हमने डायमेंशन क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिया, और इस तरीके से हमने क्या कर इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। मीन डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन we have to find out which is equal to ml square T inverse 2g. Now we take the right hand side of equation, that is the mc square. So m is the mass and c is the speed of light जी। यहाँ पर c is the speed of light, in our dimension it will consider as a speed. So यहाँ पर m mass के dimension, c आपका स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड जो है चाहे आम ऑब्जेक्ट की हो या लाइट की हो, फार्मूला एक ही है और डायमेंशन भी सेम ही है जी। जो आपके पास स्पीड के डायमेंशन है वही आपके पास
स्पीड ऑफ लाइट सी के डायमेंशन होंगे, तो सो हमने एल टी इनवर्स यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सी के डायमेंशन पुट कर दिए। सी हो या वी हो, दोनों के स्पीड है जी, फिनोमेना एक ही है जी, सिर्फ इसमें क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, सी से बड़ा स्पीड ऑफ लाइट है, और वी आपके पास क्या है स्पीड ऑफ नॉर्मल ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड है या ऑन अर्थ है। तो सो बेसिक फार्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ क्या है इसमें लाइट की बात हो रही है। तो हमने क्या किया इसमें लाइट के सी के डायमेंशन एल टी इनवर्स पुट कर दिए। अब हमने क्या किया आपस में कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास क्या एम एल आपके पास क्या बन गया, एम एल बन गए एम मल्टीप्लाई एल एंड टी इनवर्स 1। तो ये आपके पास देखें, ये आपका यहाँ स्केयर है, तो इट्स मीन दैट ये आपका ये स्पीड के डायमेंशन है, यहाँ ऊपर हमने स्केयर भी लिखना है जी, ठीक है। ये आपके पास क्या है एम सी स्केयर है जी, तो एम सी स्केयर है, तो जब आप पास स्केयर को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा एम एल स्केयर एंड टी इनवर्स 2 बन जाएगा। तो ये मीन ये आपका डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन आ गए, दैट इज एम एल स्केयर टी पावर -2, और ये आपका दोनों साइड डायमेंशन है, इनको चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन व्हिच इज एम एल स्केयर टी इनवर्स 2 and dimension on right hand side of equation that is ml square t inverse 2. So dimension on left hand side of equation is equal to dimension on right hand side of equation. So rule के तहत क्या है दोनों साइड के dimension equal है, it's mean that ये equation e is equal to mc square is dimensionally correct है। So यही हमारा target था, यही हमारा mission था। So we have to expand it. If you have any question then you can ask question. Dear students, we move to our last question, last but not least. So question 10 is here, and suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed is v is proportional to some power of r, say r power n, and some power of v, say v power n. Determine the powers of r and v. So this is our question statement. These students, if you read this question straight carefully, so it is telling that a particle is moving in a circular path. A particle is moving in a circular path, and this radius of circular path is r here, and it is telling that acceleration is directly proportional to r power n into v power m. यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि acceleration of a particle के that is directly proportional to radius of circle and also directly proportional to speed of the particle। यानी इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको हमने क्या कह दिए रेडियस के यहाँ का प्रोपोर्शनल है, दैट इज वी से r पावर n and also it is proportional to v and we say v power n। यानी देखें यहाँ पास इसमें लिखे हैं कि मूविंग पार्टिकल इन सर्कल रेडियस r यूनिफॉर्म स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r। ये देखें कहते हैं कि जो पार्टिकल मूव कर रहे सर्कुलर पाथ पे, वो बताया जा रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि इसकी जो स्पीड v है प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r, उसको हमने क्या कह दिया से r पावर n। ये आप इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल है दैट इज v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r। ये बता दिया गया जी कि ये आपका सम पावर ऑफ r ये रेडियस के सम पावर ऑफ r के बराबर है, और उसको हमने सपोज कर लिया दैट इज से r पावर n। और फिर कहता है उसके जो स्पीड आल्सो है, एक तो r पावर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी r पावर n कह दिए, और दूसरी बात जो कही गई है कि इसकी जो स्पीड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल इसके एक्सेलरेशन ऑफ जो पार्टिकल है वो स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको v पावर n कह दिया जी। यानी इधर आपका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू some value of r, some proportional to some power of r, that is say r power n। यानी acceleration is directly proportional to some power of r, we say r power n, and it is also acceleration is directly proportional to some power of speed, that is we say it v power m। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूरा गिवन है। ये देखिए नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r power n into v power m, and we have to find out the value of m. What is the value of m and what is the value of n? यानी पावर की जो वैल्यू है m और n, वो वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो डी स्टूडेंट्स को याद रखें जब भी कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है
तो सबसे पहला स्टेप जो प्रिकॉशनरी होता है वो हम क्या करना होता है, इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है कि इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या क्या डाटा गिवन है और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये चीज़ें देख के तो जो चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं डाटा में क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में गिवन डाटा कहते हैं। तो अब इस डाटा को जब हमने पढ़ा तो ये हमें ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर एन वी पावर एम मिल गया जी। तो हमें कहा क्या जा रहा है, to determine m value of m we have to find out and value of n we have to find out. So this is our question and its statement, and what we have to do, this is our written in the slides. Now we have to find out that is as in our given statement a is directly proportional to r power n v power m. तो हमने क्या किया, ये a प्रोपोर्शनल का साइन है, इसमें जब हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने तो इक्वल साइन आता हो, साथ कांस्टेंट आता है। तो ये हम देखें a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कांस्टेंट r पावर n v पावर m। तो ये हमारे पास क्या मेजर इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन दोनों साइड पे क्या करने हैं, डायमेंशन ले लेने हैं जी। तो सो हमने लेफ्ट साइड पे डायमेंशन a पे डायमेंशन अप्लाई कर लिया, इक्वल टू कांस्टेंट r के डायमेंशन एंड देन आपके पास क्या ये v के डायमेंशन, हमने दोनों साइड पे क्या कर लिए, डायमेंशन अप्लाई कर दिए। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता तो ये ऐसे ही लिखा गया है। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन देखें डी स्टूडेंट, ये आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे इसके डायमेंशन क्या है, दैट इज LT इनवर्स 2। आगे आप पास क्या है कांस्टेंट, इसी तरह आई क्योंकि कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते, नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते, सो इसी तरह आई। एंड देन आप पास R के है। तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन के डायमेंशन LT - 2 हमने पुट कर दिए इज इक्वल टू कांस्टेंट, 2 डायमेंशन नहीं होते। एंड देन रेडियस ये आप डिस्टेंस में आता है, सो इसके डायमेंशन लेंथ है L है, L पावर n है। इसी तरह आगे आप पास के स्पीड v है, इसके डायमेंशन LT इनवर्स 1 है और पावर m इसी तरह ही। तो सो दिस इंप्लाइज हमने क्या किया, इसे आगे फर्दर कैलकुलेट करें, दैट इज LT इनवर्स 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आगे हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया जी। अब इसमें देखें L आपके पास दोनों में मौजूद है, L आपके पास यहाँ भी इस जगह मौजूद है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो जब वेरिएबल सेम हो, दोनों वेरिएबल जो मल्टीप्लाई सेम हो, उनके एक्सपोनेंट ये देखें क्या होते हैं, ऊपर में पावर में ऐड हो जाते हैं। आगे इसी तरह आपके पास T है, तो T की इसमें पावर जो है T इनवर्स 1 है और आगे के T इनवर्स 2 है। और यहाँ आप देखें तो इसमें आपके पास इनके डायमेंशन आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। दैट इज हियर T डायमेंशन, हियर इट इज -m minus here -1 is there and multiply with m, it will become a -m, and here it is n plus m, because इनमें जो पावर है आपस में ये n की पावर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रही है, l पावर n बने हैं और इधर आपके पास m पावर l पावर m बना था। ये दोनों पावर यहाँ n प्लस m क्या हुई, ऐड हुई। इसी तरीके से आपका जो t इनवर्स है इसके साथ ये m की पावर अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगी, -m बन जाएगी। तो सो इस तरीके से हमने इसे क्या किया, सॉल्व किया है। और फिर आगे हमने क्या करना है, इन दोनों साइड पे जो डायमेंशन है इनको कंपैरिजन करना है, इनको कंपेयर करना है, इनकी पावर्स का कंपैरिजन करना है। अब इसमें आप देखें तो यहाँ आपके पास जो टाइम की डायमेंशन है, इधर आप पास इसकी पावर को इक्वेट करते हैं। ये देखें आप पास इधर टाइम की पावर क्या है, -2 है और इधर आप पास टी की पावर जो है -m है जी। इनको हमने कंपैरिजन किया तो ये आप पास ये देखिए -2 इक्वल टू -m, यानी कि टी की जो डायमेंशन है इसके पावर्स को हमने इक्वेट किया है। तो ये आप पास -2 इक्वल टू -m, सो आगे दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू आप पास क्या 2 आ गया। दोनों साइड पे जो माइनस हो क्या होगी, कैंसिल हो गई थी। इस तरह हमने क्या करना, एल की पावर को भी क्या करना, आपस में इक्वेट करना। ये देखिए एल इधर भी है और यहाँ इधर भी एल है जी। तो एक साइड पे एल की पावर क्या है नहीं लिखी, इसका मतलब एल की पावर क्या है 1 है जी, और दूसरी साइड पे एल की पावर क्या n प्लस m है। तो ये हमने देखिए दोनों की पावर्स को आपस में इक्वेट कर लिया, l इज इक्वल टू n प्लस m। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसमें m की वैल्यू क्या कर दी, इसमें इंसर्ट कर दिए। तो या आप क्या कर लें, इसको रीअरेंज कर लें, हमें n चाहिए तो m दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ हमने देखें m की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर दी, दैट इज -2। तो सो ओवरऑल फाइनल कैलकुलेशन के बाद आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई है। सो इस तरीके से हमने n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और m की वैल्यू दैट इज 2 वो भी हमने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। और यही हमारा काम था, टारगेट था। तो सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। Thanks you, dear student, for listening.
इसके साथ हमारी क्लास खत्म होती है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।